Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, we are carrying on with this first chapter, history. We have started it yesterday. In the last video, you have seen we have discussed about the incident that had happened in Paris, in France. Yes, children, France के incident की बात करेंगे because we are talking about the French Revolution. रेवोल्यूशन हम बाद में बात करेंगे. फर्स्ट वी टॉक ऑफ कोर्स बाद में नहीं. The first thing that we came to know about is the revolution that had happened in Paris on 14th July 1789. We are talking about the incident of last class में जो हमने डिस्कस किया है, incident of 14th July 1789. Got it, children? ये जब हमने डिस्कस किया, इसके बारे में जब हमने बात की, तो वी केम टू नो दैट द पीपल वेर वेरी एंग्री एंड दे वेंट एंड दे स्टॉर्म्ड द बेसाइल. व्हाट वाज बेसाइल? बेसाइल वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन. वो जेल था. बेसाइल वो जेल था जहां पे कि it was a prison, and the most important thing is that कि it was a fort. इतना बड़ा बिल्डिंग होने के बाद भी वहां पे क्या होता था, लोगों को मार दिया जाता था, फांसी पे लटकाया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था. All these things was driving the people crazy. लोग बिल्कुल पागल हो रहे थे, लोग बिल्कुल परेशान हो रहे थे. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड कि 7,000 लोग पेरिस में दे हैड कम ऑन द रोड्स एंड दे स्टॉर्म्ड द बसाई, जो फोर्ट्रेस प्रिजन था. पूरा नेस्त नाबूद कर दिया, उसको पूरी तरह से गिरा दिया, और वहां पे जहां कभी किला खड़ा था वहां पे पूरी की पूरी जमीन कर दी. It was all ground in rubbles. As a result, what happened? कि the emperor was shocked कि ये हो क्या गया है. तो आखिर लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों था? Why were the people so angry? पूरा का पूरा खजाना इन्होंने लूट लिया. And they said कि the king has his own army. एक राजा की अपनी आर्मी है, हम भी अपनी आर्मी बनाएंगे. वी विल ऑल्सो मेक आवर आर्मी. पीपल वेर इन अ मूड टू मेक देयर ओन मिलिशिया. लेकिन आर्मी बनाने के लिए एम्यूनिशंस चाहिए, गन्स चाहिए, ठीक है, हथियार चाहिए. सो हथियार लेने के लिए ही वो बेसाइल के अंदर घुसे थे. लेकिन हथियार तो वहां पे दे किल्ड द कमांडर. दे डिड नॉट गेट एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस देयर. एंड दे पूरा तोड़फोड़ मचा दी. द प्लेस वेयर वॉज फोर्ट्रेस. और उसके बाद उसके पत्थर के टुकड़े लाके मार्केट में बेचे कि ये लो, इस पत्थर के टुकड़े को रखो. याद रखना कि द होल ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द कॉमन पीपल. आम आदमी का गुस्सा जब चढ़ता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है. अब लेकिन इसके पीछे की कहानी, व्हाट वॉज द स्टोरी बिहाइंड इट? Why did the people get so angry? So what we are understanding here is the next topic, that is the French society during the late 18th century. During the late 18th century. This is the topic, first topic. कि आखिर ऐसा क्या था कि लोगों के अंदर इतना एंगर था. So the first point is in 1774. रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में. लेकिन इसकी बिगनिंग तब हो गई थी. इट हैड स्टार्टेड इन 1774. लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली. लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली ascended the throne of France. ये राजा बने फ्रांस के. Got it? I mean, गद्दी पे बैठे. ascended the throne of France.
गॉट इट. बैठ तो गई है गद्दी पे. एंड when he has ascended the throne, बहुत छोटे थे. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. Try to understand. कहानी है, ये पूरी कहानी है. एक राजा थे 1774 में, लुई 16 नाम के थे, and he was 20 years old. एंड किस डायनेस्टी को, उनके खानदान का नाम क्या था? इट वॉज द बर्बन डायनेस्टी. जैसे वी हैव द मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी. इन द सेम वे इन यूरोप they were very big empires, they were very big ruling dynasty, and they were the Bourbon rulers. So he was 20 years old and married to Austrian princess Mary Antoinette. Mary Antoinette नाम याद रखिएगा, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड कि जब ये राजा बने, व्हेन ही बिकेम द किंग, इन्होंने देखा कि पूरा खजाना खाली है. द होल ट्रेजर इज एम्प्टी. सो व्हेन ही बिकेम किंग, he found the whole treasure empty. खजाना तो पूरा खाली था. एंड क्यों, व्हाई? फ्रांस में पूरा खजाना खाली, ऐसा क्या हो गया था? बिकॉज देयर वॉज बड़े टाइम से वॉर चल रहा था. When there is any war, lot of money is spent in that. Whenever, जब भी कोई लड़ाई होती है, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं. So बहुत, there was a big extravagant court, immense palace of Versailles was there. वो जो उनका पैलेस था. Louis 16 में France had helped 13 American colonies. Please understand, these reasons you need to be very clear on. Treasure was empty because long year of wars was there. Causes iska समझो. Causes. This can be a question, this can be a asked question, that why was the treasury empty? So, first is long years of war. काफी दिन तक वॉर चल रही थी. ओके, तो वॉर में लॉटर had drained the wealth, had drained the wealth. पूरा खजाना खाली हो गया था. ओके, एंड फ्रांस had helped. Extravagant court was there. बहुत ही ब्यूटीफुल था. द कोर्ट ऑफ द फ्रेंच एम्परर, जो उनका राज दरबार था ना, इट वॉज वेरी बिग. और उसको मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे. इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ कोर्ट वॉज देयर. ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट. Extravagant court at immense palace at Versailles. वर्सेल्स में बहुत बड़ा ये किला था इनका. वहां पे ये सारी चीजें मेंटेन हो रही थी. प्लस लुई 16 में क्या था? लुई 16 के अंडर में 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इन्होंने बहुत हेल्प किया था. They had helped the American colonies to gain their independence and from the common enemy Britain. You know, Britishers and French. Please understand, these are the two countries, Britain and France. Staunch enemies, big enemies, हमेशा लड़ते रहते हैं. तो अमेरिका में फाइट चल रही थी. फ्रांस had sent its army, France had sent its money कि ब्रिटिशर्स को जीतने नहीं देना है, ब्रिटेन को हमेशा जीत के ब्रिटेन से हमेशा जीतना है.
to be always winners from Britain, and Britain should never raise its head. Now what happened कि their complete money was exhausted, पैसा तो इनके पास सारा खत्म हो गया था, and all these reasons you have to explain कि आखिर खजाना खाली क्यों हो गया था. So these are some of the reasons. You can mark it in your book itself, or इसका भी screenshot लेके you can write your answers, children. Please understand. Got it? So under Louis XVI, France helped (13) American colonies to gain independence. ठीक है? From common enemy Britain. ब्रिटेन से इनको छुटकारा चाहिए था, तो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने पैसे का मुंह नहीं देखा. जितना भी पैसा जाता है, जितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन ब्रिटेन को जीतने नहीं देना है. वॉर में क्या था? बिलियन लीवर्स was the debt that they had already risen to more than 2 billion livers. ये जो war had happened, already they were कर्जे में वो पहले से ही थे, लेकिन ब्रिटेन के साथ वॉर करने के चक्कर में they were indebted that had already risen to more than 2 billion livers. They were in debt. Debt का मतलब होता है कर्जा. ठीक है? कर्जे में आ गए थे in debt of 2 billion, 2 करोड़, हम जो इसको हिंदी में करोड़ कहते हैं, 2 billion livers. Livers is the currency of France. हमारे यहाँ पे इट इज मनी, इट इज रुपया एंड पैसा. ठीक है? 50 पैसा, 1 रुपीज. उनके यहाँ पे इट इज लिवर्स. नाउ व्हाट हैपेंड? लेंडर्स हु हैव गिवन द स्टेट क्रेडिट, अब उन्होंने क्या किया? कहा कि अब जो लोग पैसे देंगे, द पीपल हु हैड ऑलरेडी गिवन द लोन, दे वुड बी लुकिंग फॉर देयर प्रॉफिट. उन्होंने कहा कि आपने लोन लिया हुआ है, इस लोन के ऊपर वी वांट इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. प्लीज गिव अस द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, एंड द इंटरेस्ट वाज 10%. 10% इंटरेस्ट was charged on loans. लोन तो दे दिया, ओके, लोन ले लिया इन्होंने. अब लोन चुकाना भी तो है. लोन का मतलब ये थोड़ी होता है कि somebody donated, डोनेशन तो मिला नहीं है. कर्जा आपने लिया है तो उस कर्जे को आपको चुकाना भी पड़ेगा, एंड 10% इंटरेस्ट ऑन दैट लोन. सो French government was obliged to increase percentage of its budget. Interest payment करना है, लोन तो वो कर नहीं सकते हैं. So French government had to increase percentage of its budget. ओके, अपना बजट इनको बढ़ाना पड़ा. ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, इंटरेस्ट पेमेंट इनको करना है. अब they had to increase the taxes. ये सारा पैसा कहां से आएगा? From where will they get the money? They have to take the money from the people who are already paying taxes to the state. They increased the taxes. Got it? गरीब लोग जो ऑलरेडी इतने टैक्सेस पे कर रहे थे, उनका टैक्सेस इनको बढ़ाना पड़ा, एंड
meet this expense, they on the interest payment and the regular expenses, they had to increase the taxes. All that money that they were charging, all the loans that they had taken, उन loans को कौन pay करेगा? It was to be paid by the common people. Regular expenses were there, जैसे कि maintaining an army, the court, running the government offices, universities, they had to increase taxes. Suppose I'm paying tax, I was paying a 10 rupees. Now they said, no, not 10 rupees. You have to pay a 20 rupees as tax. अचानक से, अब imagine कि the people who are already very poor, how will they pay the loan? How will they pay the taxes? Such increased taxes. They were already burdened with the taxes. And अब समझो कि when they have increased the taxes, so who were these people who were paying the taxes? ये कौन लोग थे जो कि taxes pay कर रहे थे? Got it? The society and institution that existed before 1789 was called as old regime. Okay, French society was divided into 3 states. Now please understand this French society. अभी तो हमने फ्रांस की प्रॉब्लम समझ ली. We understood कि what actually was the problem existing in France. Now understand that French society was divided into 3 categories. Was divided into 3 states. Okay, and यहाँ पे एक term आता है which you need to remember, that the society and institution, the society and institution of France that existed before 1789 was called as old regime. Was called as old regime. Got it? Please understand. This, मतलब कि पुराना राज जो था, the old regime that was there, peasants were 90% of the population were peasants. 90% लोग क्या थे? Farmers थे. 90% of society was peasant. Got it? And only a small number of them owned the land that they cultivated. सारे लोग जो है owners नहीं थे. They were all working as मजदूर on somebody else's land. 90% उसमें very small number of them owned, very small number owned land. अपनी जमीन नहीं होती थी. ये जो जमींदार होते थे, the landowners were there or the feudal lords were there, उनकी जमीनों पे ये काम करते थे. They did not have their own land. 60% of land was owned by the nobles. 60% of land was owned by nobles. Nobles, you know, big people who were working with the king, owning big houses, having a lot of money,
and they were called to be the most respectable people in the society. That's why they were called as nobles. Noble का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, very good people are called as nobles. Okay, and the church and the rich member of the third estate. Nobles, church, and rich members of third state. थर्ड स्टेट मतलब ये जो 90% ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें सम पीपल वेर देयर हु वेर वेरी रिच, जो कि बहुत हाई सोसाइटी के लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, एंड दे वेर हैविंग अ वेरी नाइस लाइफ. तो द फर्स्ट टू स्टेट्स हु वेर देयर, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ. पैदा हुए हैं रिच फैमिली में तो मरते दम तक रिच ही रहेंगे बाय बर्थ. काम कर रहे नहीं कर रहे उससे कोई मतलब नहीं है. There was no meaning of working or not working. But just because they are born in the top class families, so they will be enjoying all the privileges. That was there. Most important was that 3 states का देखो कितना, I mean, there was so much of irregularity. कुछ ही लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और उनको ही सारा टैक्सेस भी पे करना है. दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी इलीगल. बहुत ही इनके साथ गलत हो रहा था. इट वॉज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट वॉज हैपनिंग. गॉट इट चिल्ड्रन? प्लीज अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट 2 states, that is the clergy and the nobility, the clergy and the nobility had to pay not pay. Nobility enjoyed privileges by birth. Enjoyed privileges by birth. Born in a rich family, na? Born in a rich family, so they will be dying rich only. And nobles enjoyed feudal privileges. कोई भी taxes उनको pay नहीं करना है. Peasants क्या है? They have to render services to the Lord. Lord कहा जाता था. Lord हम किसको कहते हैं? We call Lord the gods. भगवान को हम Lord कहते हैं. So they were called as the lords, and the peasants, they had to work in their house, in the field, to serve in the army and to participate in building roads. Army में भी काम करना है, roads भी build करनी है. All this work they have to do. Yes. Now you can see what kind of difference existed in this society. कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था. I had shown you a diagram. Today I'll give you the explanation. After understanding these things, you can easily understand the diagram. Now let's discuss the diagram from the book itself. Come. Children, just now we discussed about the Louis XVI. I just wanted to show you 2-3 things from the book. Louis XVI from the Bourbon family, and the financial resources of France was already drained. ये देख लो, जब when he has come to the throne, जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि there is empty treasury, no money was there. अब यहाँ पे the answer, the points that are there, you have to make a note of these points. I have already given you the answer. I had already discussed these points in detail, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना. There was more than a billion livres was there, जिसमें कि they were in debt. Immense palace of Versailles was to be maintained. Then 13 American colonies को independence दिलाने के लिए they had spent lot of money. कि आखिर इतना पैसा कहाँ खर्च हो गया था? Where have they spent so much of money? And lenders
credit. Now they started charging 10% of interest on loans, and the French government had to spend an increasing percentage on interest payment. तो रेगुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए, टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, running the government offices or universities, taxes were increased. French society 18th century में 3 states were there and only members of the third state were paid taxes. Got it? So this was the part of the feudal system that was there. And old regime, याद रखिएगा, what is the meaning of the term old regime? The French society that existed before 1789 was called as old regime. Now, members of the first 2 states, that is the clergy, the nobility, enjoyed privileges by birth, and they did not want to pay the taxes. Nobles had lot of privileges. Please understand, and I wanted to show you this paragraph where we are talking about church was extracting tichet and taille. Direct tax was there, taille. Church was extracting tichet. Number of indirect taxes were also there. एवरीडे कंजम्पशन के चीज़ों के ऊपर, जैसे सॉल्ट है, टोबैको है. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दैट वाज देयर ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस, इट वाज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन. थर्ड स्टेट वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज. नाउ ये आपको, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड मीनिंग्स. लीवर, लीवर मीन्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, विच स्टॉप्ड in 1794. Then clergy, what is clergy? It is the group of persons who are invested with special functions in the church. Tichet, what is tichet? Tichet is a tax that was levied by the church. 1/10 of agricultural produce. church को भी taxes देना है इन लोगों को. That was there. So please remember tichet and taille. Taille was the tax that was to be directly paid to the state. डायरेक्टली राजा को भी टैक्सेस पे करना था इन लोगों को, एंड दैट वाज कॉल्ड एज टेले. सो टीशे एंड टेले, लीवर, क्लर्जी, ऑल दीज मीनिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर 1 मार्क इट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. 1 नंबर में ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए आप देख लीजिएगा. There is this picture that is there, and next topic that is there, we will be starting this next topic in the next class. Got it, children? Please study this picture and do discuss this picture with me in the online session or in the offline session, whichever type of class we have. You are most welcome to discuss this picture. What actually is it and what does the picture mean? Got it, children? So these are things that I wanted to show you. Now next class we will be starting with the new topic. Till then, children, thank you so much and all the best to you.